Hi, good evening, Divyansu. Hi. Good evening, sir. How are you? Evening. Fine, fine. Happy Independence Day. Happy Independence. So, are you able to see my presentation? Yeah, it is visible. Presentation visible. Okay. Divyansu, yesterday also one online class was there on Google Meet, Yeah. I think. Yeah. So they are same or these are all different? They will like both of us are being assigned to take practice problems basically. So, Okay. so the most of the times we might refer We to need to attend in different yeah, we need to questions. attend in both case or No, single. Uh, single class is also enough. Single class is also enough. Because we will only okay, majorly take questions like practice problems and if okay, okay. yeah sometime they might explain like in my sessions I am trying to give a summary initially and but our main objective is to give practice problems, so any of the two sessions you can attend both, you can attend one also. No issue. Okay.
We can should we start or should we wait more time? I think we can start. Yeah. So like last week we discussed about the waste stabilization. In last week class, sir discussed about this waste stabilization, and we basically discussed about the pH, BOD, and volatile fatty acids and different phases uh, of degradation of like organic waste in the landfill. Then we discussed about the mechanisms of for being a hazardous waste, like different uh, solid waste characterizations, like regulatory by source generator, physical characteristics, chemical composition. Then we also seen the TCLP test and how we use what it is used for, and we seen certain formulas, and after that we see the biodegradable fraction, how to calculate the biodegradable fraction. So after biodegradable fraction, we come to the thermal characterization of the waste. So in thermal characterization of the waste, if you want to use certain waste for energy extraction or waste to energy use, so we need to determine how much amount of energy we can recover from particular waste. So we need to do thermal characterization. So in thermal characterization, basically, we different components in thermal characterization is volatile solids, fixed carbon, volatile solids, fixed carbon, and the ash, the water present, and the inorganics. So in out of all these fractions, volatile solids are the one which are going to provide heat when they burn, and they are the significant fraction which we are looking for. If the volatile solids are in sufficient amount, then based on how much heat they produce in burning, we can determine whether we should go for based on the characteristics of the waste. We can choose which system we should use, whether we should select the particular waste for uh, thermal treatment or for energy extraction. So for that, there's one equation which is used. It's called Dulong equation. So this is basically tells us about the amount of heat value which we can get from the waste. So here, uh, here in formula, carbon, hydrogen, oxygen, sulfur, and nitrogen percentage, how much percentage they are present in a particular waste are determined, and then we replace it in this formula, and we basically get uh, the heat energy in terms of BTU per pound. In this formula, all the parameters, the carbon, hydrogen, sulfur, nitrogen, oxygen, these values are replaced in terms of percentage, and we don't factor water in this, because water, if the water present in the waste, then it will only take heat, the latent heat of vaporization. So the from liquid state converted to vapor stage, it will require heat. So it will extract heat rather than producing some amount of heat. So we don't factor water in this equation. Then after that, sir discussed about the basically then further sir discussed about the chemical characterization, where we determine the chemical composition of the waste, solid waste, which might include, like if we have paper, the paper might have cellulose, hemicellulose, and lignin. And lignin is particularly, it's not very biodegradable. So we initially, before biodegradation, you send it for biodegradation, you might need to further break it down, the lignin, into smaller hydrocarbons so that it may become biodegradable. Lignin is not naturally very biodegradable compound.
compounds like cellulose and hemicellulose. They are comparatively more biodegradable. In similar manner, further, sir discuss about the like various instrument we use in environmental lab. So how we ensure the quality, like how we ensure the quality and quality assurance, basically quality assurance and quality control. So how do we know that the readings which we are getting, what is the least count, what is the detection limit of a particular instrument, like what is the least value a particular instrument can measure. For example, if we are taking a measurement from a spectrophotometer. So a spectrophotometer basically an instrument where it measures the absorption of light at as particular specific wavelength. So if we don't know what is the least value or the maximum value it can measure, so we might report the least value wrong. So in that sense, the two things we do, like first is we make a calibration curve. So while making a calibration curve, we make different solutions of different concentration, and we determine the corresponding absorbance to those different concentration, and then we draw a graph. Then we basically draw a regress, uh, a, a, a line which fits those different points through regression analysis, and we get an equation for that multiple points. So we basically do curve fitting. So we get equation which basically represents with the which is the equation for the that curve fitting line, and we get a regression coefficient which basically tells us um, how much those that line represents those points which we have plotted. So in this way, like in method of in the for like how we determine method of detection limit for particular instrument is through this formula, which is basically a T into S, and T is a critical T value at 99% level, 99% of significance, and S is standard deviation. Uh, where n here represents the number of sample and n minus 1 represents the degree of freedom. So moving forward, we today we will do more questions. So this is the first question based on the two formulas which were covered in week 3 class. So this is the first question is regarding method detection. So here we have to determine the MDL for different confidence interval. So you can try to um, do this question, and after some time we will discuss the solution. Take 5-10 minutes to do this question because it will be calculative. Question will be calculative because you have to calculate standard deviation as well as you also need a T table which is uh, given here also. So just read the question and then you can start attempting. And when you need to see the T value, just tell me. I will go to the next slide.
Joined just now. We are doing question on MDL, method detection limit. This is the question you just try once on your side, then we will. This is the formula for the method detection limit. You once try for yourself and then you will do. So we need to calculate the standard deviation here. Standard deviation here. Any formula for that? How do we calculate that? Same standard formula under root of x minus the mean value square divided by n. So here we are not we are not taking certain sample from a population, so directly population formula will be applicable. So under root of x bar, that means mean minus the each value uh, whole square and divided by n. Is it 0.73? Standard deviation. Uh, Yeah, 0.73.
For T value calculation, you will be requiring this P table. So DF is basically degree of freedom, which is equal to n minus 1. So based on, like, we have three values to estimate: 99%, 95%, and 99.9%. Based on that, we can calculate here P value from. What is this DF? Degree of freedom, n minus 1. Here in formula, we have in subscript n minus 1 and comma 0.99, 99%. So here n degree of freedom is n minus 1. N is number of samples here. So in this case, n is 10. 9, 10, yeah. Yeah. So 9. Yeah. So we have to calculate for 90, just so that question again. 99%, 95%, 9, and 99.9% confidence interval. 99.9. Okay, now that table. Yeah, please show that formula again. MDL is equal to T into S. The T value you get from the table and standard deviation. so we have to just multiply that with Yeah. standard deviation. Yeah. Oh, so at 99 it is 2.06. Okay. 99 is 2.06 at 95 it is 1.339. 34. Yeah, 339 is 1.34. And for And then 99.9, 3.14. it is 3.1. Yeah. mg So, per liter. so these value basically represent what is the minimum value from the instrument which will be reliable measurement. Okay. With So this much, below this there will below this if the value comes then it's a problem, then and yeah, above this it is okay. okay, yeah. Normally in research work we consider 95% confidence limit as standard. So if you satisfy 95% confidence limit, then we can consider that data is reliable.
Okay. So if the data is below, if your any of the measurement is below 1.34, that means we are saying that only below this value, the value of measurement is not reliable. So any measurement in your data is below 1.34, then that value is not that much reliable. All the values should be above 1.35. Then only we can say those measurement are, if we want 95% confidence. So let's solve the question. So it's basically you are analyzing an environmental sample for particular element to determine detection limit. Particular analysis method you're using. You analyze 10 duplicate. So in this, the minimum amount of measurement you need is 7. So here we have, I think, 10 measurements, 10 duplicate of the uh, same reading, and these are the 10 values. And now we want to determine the detection limit for different confidence limit. So, and here we have T table. So first we need to calculate the standard deviation. So we'll, for calculating standard deviation, we are going to, here this is a formula for standard deviation. Here xi is mu is a mean value. Sorry, xi is the mean value. So we need to, so mu is the mean value. We need to calculate the mean value for determining the standard deviation. So here, first we will calculate the mean, which is basically add all the readings and divided by the number of these readings. So we will get the mean value as 6 milligram per liter. Then we will go for the calculation of standard deviation, which is mean minus each and every reading one by one, and you uh, square each estimation, and then you add all the values, and then you divide it by number of estimations. So this is the standard deviation formula for population. If we are taking, if we have a population, if we are taking certain readings from that uh, population set, so we are taking some subset from that population, then normally use uh, formula n minus 1 if the your sample is not representative of the population. So here we get the standard deviation of 0.73. So here calculation is like this only. Like first value is 5.6. So 5.6 minus mean square, and like that each and every 10 observation we subtract standard mean value from it, and then we square it, add it, divided by number of observation, and we have mean value as 0.73 milligrams per liter. After this, as we have seen, the formula is standard deviation into t value. So now we have to calculate t value for these three conditions. When we have 99% confidence and 95% confidence and 99.9% confidence. So we directly go the t table here. In y-axis we have df. Df is degree of freedom, which is n minus 1, and n is number of observations. This 10. 10 is n value, and n minus 1 is degree of freedom. So here for this question, degree of freedom is 9. So in y-axis the value is fixed 9, and three different confidence level we have to check. One is 95, one is 99, second is 99, and third is 99. So for 95 we have t value 1.833, and for 99% we have t value as along 9 it will be 2.871, and for 99.9% the t value will be again in the same row, it will be 4.501. So we have three value 1.833, 2.821, and 4.297. So we go here
So for MDL for 95%, p-value was 1.833. So 1.833 into standard deviation, which will give us 1.34. So for 95% confidence level, the MDL value for the instrument is 1.34 milligrams per liter. Similarly, for 99% confidence level, the t value for 99% was 2.821. For 99%, in the ninth column, the value was 2.821. So 2.821 into standard deviation will give us the detection limit for the instrument for 99% confidence level, which is 2.06. And similarly, for 99.9%, the value p value was 4.297. So 4.297 into standard deviation will give us 3.14, which is the detection limit for particular instrument with 99.9% confidence level. So if for each confidence level, if the value goes below the detection limit, that reading can't be considered correct. So the next numerical is here. There are two questions in the two sub questions, which is what will be the chemical formula of the waste. Based on the percentage, we need to determine the chemical formula, and then once we have the chemical formula, we also need to determine the heat value of the waste. We can directly calculate heat value of the waste from percentage also. So you don't need to solve first question for solving second question. You can directly solve second also. Yeah, take some time to do this question. And first question is basically what we do in 11th standard, uh, finding the chemical formula of certain compound. So similar way we can solve this one. The second part, uh, formula for calculation is this. You can write this formula. Yeah, 1 minute. Yeah. Oh, we have to just take this C value from what you have given, na? Yeah. Directly here C value, H value all are in percentage forms.
Is this formula? Can I go to the question again? 1 minute. Huh? Yeah. Yeah, you can go to the formula now. It's 7217.5. Gas. Heat value is correct. 71 something. Okay, that is BTU. Yeah. BTU. Oh, British Thermal Unit per pound. And convert it into kg, kilojoule per kg also. 16744.6. Huh? Yeah, yeah. Now you can attempt first part. Chemical formula. फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में केमिकल फॉर्मूला निकालना है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर की परसेंटेज दे रखी है। इस परसेंटेज में वेस्ट है, तो इस वेस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, जैसे C6H11O3, इस तरीके तो उसके लिए ये से क्या। मोलिकुलर वो जानना जरूरी होगा। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट से निकल जाए। तो जैसे ये आपको सब याद नहीं है। कार्बन का जैसे 12 है। 1 मिनट, कार्बन 12 मतलब C3 हो जाएगा ऐसे ना। नहीं नहीं, सीधे C3 नहीं होगा सीधे। जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम कार्बन होता है। ओके, ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए 1 मोल में 1 ग्राम। तो इस यही हाइड्रोजन में 1 ग्राम, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के लिए 16, 16, नाइट्रोजन 14, 40,
14 14 7 7 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास 14। और एस सल्फर और में? सल्फर के लिए होगा 31 होगा शायद, 31। तो ये सब याद नहीं है अभी, हाँ, वो क्या करना है अभी, मोल? ये लिख लीजिए, 12 जो 12 1 16 14। हाँ, 12 1 16 14 31 ये लिख लिया। तो या फिर इसको यूज करके एक बार निकाल के देखिए, और नहीं तो फिर अपन साथ में सॉल्व करेंगे। ओके ओके। सल्फर का 31 पॉइंट समथिंग, 31.32 कर लीजिए, 32 कर लीजिए आप, 32 पॉइंट समथिंग कुछ। सल्फर का? हाँ। ओके। एक्चुअली मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, वेट कर रहा हूँ मैं बात। बाकी लोग ट्राई करिए एक बार, जब किसी का हो जाए तो एक बार बोलिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग कोई ट्राई कर रहे हैं? अगर किसी को कोई डाउट है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में। अरविंदन, अरविंदन।
हाय, बाकी बाकी कलीग सब लाइन पे है तो? हाँ, हेलो पर कोई एवरीवन। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, अपन 2 मिनट रुकते हैं, 1 मिनट और रुकते हैं, फिर अपन आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन में हमको डिफरेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कितना प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर वेस में, ये दे रखा है। क्लास में सर ने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास परसेंटेज कैसे आएंगी। बेसिकली से हम जब हम बेस लेते हैं उसको, उसके कुछ स्टेप्स, उसके एनालिसिस हम करते हैं। तो उसको पहले आपको फाइन ग्रेड करना पड़ेगा कि जिससे सैंपल हो, यूनिफॉर्म हो। फिर आपका इंस्ट्रूमेंट है जो आपको डायरेक्टली डिफरेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये एलिमेंट्स जो हैं इनकी कितनी अच्छा अच्छा, परसेंट। ओके, या लास्ट लास्ट मीटिंग आई रिमेम्बर सर टोल्ड दैट वी हैव टू आइदर prepare a physical sample, grinding और उसको साइज छोटा करके, हाँ हाँ and हाँ। then we have to mix it in a solution, and through this instrument we have to find या that सी okay. एच सी एच ओ एन एस एनालिसिस आप कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट में, वो सीधे आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करा देता है। तो ये Okay. इसके बेसिस पे हम कितना हीट वैल्यू मिलेगा हमको, वो थ्योरेटिकली कितना मिलेगा वो हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद हीट वैल्यू को आपको हीट वैल्यू मिल गया उस, लेकिन उसको कन्वर्ट करना कि आप उसको डायरेक्टली हीट की फॉर्म में यूज करोगे या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज करोगे, उसमें एनर्जी लॉस जो होंगे वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन एक बार हमको कंपोजिशन मतलब मिल गया कि कितना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितना हीट हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थियोरेटिकली। तो इसमें क्या, अगर हमको केमिकल फॉर्मूला निकालना है तो वही हम 11th वाले हमारे बेसिक्स पे रहेंगे कि क्या अज्यूम कर लेते हैं कि फॉर्मूला इस तरीके से है कि CaH2, ऑक्सीजन C, नाइट्रोजन D, सल्फर E। और ये अज्यूम कर लेते हैं कि 100 kg वेस्ट है, तो 36% कार्बन है, तो 36 kg कार्बन हो जाएगा, 8 kg हाइड्रोजन हो जाएगा। ये टोटल 100% है, तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट, हर जो एलिमेंट है उसका कंपोजिशन कितना कितना केजी होगा, कितना अमाउंट होगा हर एलिमेंट का, वो डिटरमाइन कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमें मालूम है कि एक मोल में, मोल कॉन्सेप्ट में जाते हैं, एक मोल में एवोगेड्रो नंबर के बराबर है। और उसको हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि वन वन मोल इक्वल टू, अगर जैसे हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो हम 1 मोल की बात कर रहे हैं उसमें, इसमें सिमिलर एक एक और रिप्रेजेंटेशन आता है जिसमें हम ग्राम मोल की बात करते हैं। तो जैसे 1 ग्राम मोल है या फिर 1 मोल है, 1 ग्राम मोल है, तो वो ग्राम की फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो 12 ग्राम कार्बन के बराबर ही है। तो उसको अगर हम ग्राम, नॉर्मली हो गया CGS जो अपना सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड वाला। तो इसको हम ऐसा ही सिस्टम में अगर देखेंगे तो ऐसे ही सिस्टम में यूनिट्स ग्राम की जगह केजी में हो जाएगी। तो क्योंकि हमारे जो हमने वेट्स लिए हैं वो केजी में लिए हैं, तो हम केजी के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन लेंगे। तो वही सेम चीज, 1 kg मोल विल बी इक्वल टू 12 kg ऑफ कार्बन। 1 kg मोल ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 12 kg ऑफ कार्बन। जो कि हमने ग्राम में देखी थी वही चीज हमने बस किलोग्राम में लेनी, क्योंकि जो दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन होगा वो सेम ही होगा। वन 1 ग्राम मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम मोल ऑफ कार्बन। तो वही चीज अगर केजी में करेंगे तो 1 kg 1 kg मोल ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 12 kg कार्बन। तो क्योंकि हमें पीछे वाली कैलकुलेशन से पता है कि 36% ऑफ 100 kg 36 kg ऑफ कार्बन है, और 36 kg ऑफ कार्बन है, तो हमें पता है हमको बेसिकली निकालना है कि कितने केजी मोल ऑफ कार्बन है। तो हमें पता है 1 kg मोल ऑफ कार्बन में 12 kg होता है, 12 kg कार्बन होता है। तो हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3 kg मोल ऑफ कार्बन आता है पूरे ओके। वेस्ट में, पूरे वेस्ट में।
तो ऐसे हमारे पास एक तरीके से हमने कार्बन कितने केजी मोल ऑफ कार्बन है कंपाउंड में, तो ए वैल्यू आ गई हमारे पास। तो कार्बन के लिए कैलकुलेशन है, सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशन बाकी एलिमेंट के लिए भी है। तो जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो वही सेम चीज ग्राम जो सीजीएस सिस्टम में है वही एसआई यूनिट में किलोग्राम की फॉर्म में ले लेंगे और वही बी की वैल्यू निकाल देंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए भी सेम कैलकुलेशन है। पीछे वाली कैलकुलेशन से हमें पता है कि 42% है, हमने 100 केजी माना तो 42 केजी हो जाएगा। और वही वन वन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो वही सेम चीज अगर हम ऐसा ही सिस्टम में लिखेंगे तो उसको केजी में कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो वहां से हमारे पास कितना मोल, कितने केजी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा वो आता है। सिमिलरली बाकी दो एलिमेंट के लिए भी सेम कैलकुलेशन, नाइट्रोजन के लिए भी सल्फर के लिए भी, बस हमें उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, बस उससे सीधे हमें नंबर ऑफ मोल्स जितने प्रेजेंट होंगे केजी मोल्स वो पता चल जाएंगे। तो ये जो केजी मोल्स की वैल्यू जो हमारे पास सीधे आई है, जो हमने फॉर्मूला अज्यूम किया था उसमें हम सीधे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये वेस्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसलिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये मतलब नंबर जो है इंटीजर्स नहीं है, इसलिए सीधे वही यहाँ पे देखें, क्योंकि मतलब एक तरीके से वेस्ट का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में जहाँ पे हमको हीट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वही जो डूलॉन्ग फॉर्मूला जो हमने देखा है, तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनकी सीधे परसेंटेज में वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो 145 इंटू 36% था तो 36, 610, हाइड्रोजन 8% था तो 8, माइनस ऑक्सीजन 42% था तो 42 डिवाइडेड बाई 8, प्लस 40 इंटू सल्फर का 6% और नाइट्रोजन का 1%। तो आपको यहाँ पे पीटीयू पर पाउंड की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप किलो जूल पर केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 2.32 फैक्टर है, सीधे मल्टीप्लाई करके किलो जूल पर केजी में वैल्यू आ जाए। सर पहले वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट? No, it's clear now. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिमिलर है इस वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट के जैसे, बस इसमें क्या है, परसेंटेज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं कंपाउंड के, तो वहां पे जो हमने फॉर्मूला निकाला था ये पूरा वेस्ट का है, मतलब कंपाउंड का नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने इंटीजर्स नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि हम ईडीटी है तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये कंपाउंड का फॉर्मूला है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो इंटीजर फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे अपन को बीटीयू फॉर्मूला लगाना है। तो बीटीयू फॉर्मूला में परसेंटेज में रिप्लेस होता है कार्बन, हाइड्रोजन, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना तो हम परसेंटेज। यहाँ पे इसके जो नंबर दिए हैं उनको 10, 16 to 8 इनको डायरेक्ट इनके मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट दैट। हाँ, आप मतलब इनके ये मोल्स ही दे रखे हैं वो जो 10, 16, 2, 8 है, तो हाँ जो कैलकुलेशन हमने ऊपर की है उसके उल्टे डायरेक्शन में जाना है बस। उनको मोल्स दे रखे हाँ हैं, आप इनका मास निकाल लीजिए और कार्बन का मास कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, तो इससे परसेंटेज पता चल जाएगा। तो परसेंटेज एक बार आ गया तो फॉर्मूला में पुट करके हम पीटीयू वैल्यू निकाल सकते
इसमें लेकिन इसका 100% मतलब वो नहीं दिया वैल्यू, तो वो हम लोग क्या पकड़ेंगे? इसका उसमें कार्बन वो कितना है, उसमें हाइड्रोजन कितना, वो भी नहीं दिया। पकड़ने का जरूरत नहीं है। जैसे अपन को मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, तो ये एक ही, जैसे मान लीजिए एक ही मॉलिक्यूल है, तो एक मोल अगर हम मानेंगे, जैसे इसमें 10 है आपका तो नंबर ऑफ 10 इंटू मोल्स, 12 मतलब 120 हो जाएगा। 10, हाँ, तो 12, 10 × 12 आपका सीधे एक मोल का 12 मॉलिक्यूलर वो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है, तो 10 × 12 करिए, 10 मोल है, तो 120 हो गया कार्बन का। ऐसे ही हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 28 और इसका 128। तो अभी अभी क्या हाँ, करेंगे फिर? सबको ऐड कर दीजिए। 290 टू 292। 292 आपका टोटल वेट आ गया, मॉलिक्यूलर ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया इस मॉलिक्यूल का। हाँ, तो इसमें कार्बन का कितना वेट परसेंटेज है? तो कार्बन का 12 × 10 था अपना, तो 120 डिवाइडेड बाय 292, तो ये 41.09% आ जाएगा। ओके। 41 5 10 44। हाँ, अब आप इसको बीटी वाले फॉर्म, जिस समय यूनिट डूलॉन्ग सीधे डाल सकते हैं। डुलंग का वो फॉर्मूला लगाइए एक बार। तो 155C। इज अ प्रेजेंटेशन विजिबल?
I'm not able to hear. Like I'm not able to hear you, Dheeraj. Am I audible? So we are doing third question where you have to calculate the how much heat value can be recovered from a EDTA. One more EDTA. You can write in the chat box. I'm not able to hear your sound actually. You can write in the chat box if you want to say something. इसको डुलांग फॉर्मूला में लगाने से आई थिंक गड़बड़ आ रहा है थोड़ा। वैल्यू गलत आ रही है। एक एक मिनट। हाँ, माइनस है। ओके, या इट्स 6225। 6225. हाँ, 6225 आया। Actually, we have to take it like na 145 into C carbon. जी 145 इंटू तो कार्बन का आ रहा होगा 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीधे। हाँ, तो 145 into 41 है 5945 5945 और एंड ये जो 610 H माइनस 1/8 जो वो जीरो आ रहा है। ठीक है। 40 कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। 40 से अच्छा 1280। मेरे पास जो आंसर है इसका वो ए है। ए एक बार चेक करना पड़ेगा। 605। 1.09% कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए 16 जो कि 5.48%। नाइट्रोजन will be 10%।
will be 9.58. तो ऑक्सीजन के लिए 8 into 16 ऑक्सीजन 44 ठीक है 43.8 43.8 हाँ 83 दूसरा फॉर्मूला पे जाएंगे 145 into 41.09 प्लस 610 हाइड्रोजन आपका बढ़ रहा है हाइड्रोजन का 5.48 एक्चुअली ये 5.48 वाला माइनस नेगेटिव आ रहा है एक्चुअली, इसलिए हाँ गड़बड़ हो रहा है। 8 सल्फर यानी 10 times नाइट्रोजन तो ये हो जाएगा 95.8 तो ये होगा 43.83 divided by 8 5.48 minus आंसर ओहो मैंने एक्चुअली 128 ले लिया, आई मिस्टेक है। 765 53.8 plus 95.8 plus 45 and 41.09 6054.61 आ रहा है वही 6055 आ रहा है हाँ मेरे को 6240 जैसा आ रहा है। आपकी कार्बन की वैल्यू आ रही है 41.09 आपने अब ये हो सकता है सर कि आपने जो वैल्यूज लिए हैं वो आपने अप्रोक्सीमेट कर दी होंगी जैसे 41.09 हाँ को हाँ तो हाँ उससे हाँ हाँ आंसर में फर्क पड़ जाएगा हाँ राइट राइट। मतलब 2 डेसिमल तक ले लीजिए और उनको 2 डेसिमल के बाद अप्रोक्सीमेट करिए हाँ अभी 6254.75 मतलब 6255 आ हाँ गया। हाँ ए ऑप्शन इसमें 605 राइट सेकंड ये सेकंड क्वेश्चन है वैसे ही सेम क्वेश्चन है इसमें सीधे फॉर्मूला बेस्ड है ये फिर से वैसे ही करना है जैसे अभी किया था। जी ये ये इसमें सिमिलर क्वेश्चन है ये बस रिपीटेशन के लिए जैसे हमने भी किया सेम सेम वही है बस वैल्यू 600 जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला था अब ये अपने पूरे वेस्ट के लिए है। इसलिए जो जो जैसे जो नंबर है ये 600 ये बहुत ही बड़ा है ये वेस्ट मिक्सचर के लिए है। कार्बन 600 नाइट्रोजन 1100 नाइट्रोजन 10 398
8291 आया है। 8291। आई थिंक वो वही प्रॉब्लम होगा, 2 डेसिमल हाँ तक लेने में। हाँ, इसका शायद 8202 आंसर बस। तो वही अप्रोक्सीमेशन वाला अगर वो लिखा, करेक्ट आंसर इसका 82। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसका करेक्ट आंसर कितना था? 8202। 8202। कैलकुलेट करेंगे तो वही सेम 600 इंटू 12 कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए 1100 इंटू 1, ऑक्सीजन के लिए 398 इंटू 16, नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? नहीं, 10 वो तो हो गया। होता है 7200 इसमें। 1100 140 शायद आप 66 8। शायद सल्फर मिस कर और दिया होगा आपने। हाँ, सल्फर, सल्फर वाला एक मिनट कर देता हूँ इसको। नहीं, सल्फर तो इसमें है नहीं ना। ये सल्फर ये थोड़ा नेक्स्ट लाइन में चला गया। सल्फर का 40s, सल्फर का कितना है? फिर भी 727792 आ रहा है। कम आ रहा है वैल्यू। ठीक है। सल्फर का कितना वैल्यू है आगे? 32 एस एटॉमिक थर्टी मास। टू है। 32 एटॉमिक मास है। वैल्यू शायद उसको 1 कंसीडर करना पड़ेगा, उसमें आगे कुछ है नहीं। सल्फर का 40s। मैं एक बार क्वेश्चन और क्रॉस चेक कर देता हूँ। एक्चुअली मेरा 8301.8 आ रहा है। 8301। ठीक है। जो सी वाला पोर्शन है ना वो। मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल है ना? प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? हाँ, स्लाइड है, आप उसको थोड़ा वो प्रेजेंटेशन मोड में डाल देंगे तो दिखेगा बड़ा।
वैसे दिख रहा है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। इसका देखिए कार्बन का परसेंटेज इज कमिंग 48.52%। सल्फर का अगर हम ले लें तो 32 600 ब्लड प्रेशर 16 48.51 48.52। ठीक है 52 ये आएगा बस अगला हाइड्रोजन आएगा का 7.41 7.41 और नाइट्रोजन 6 0.94। 42.91 ऑक्सीजन का 42.9। सल्फर 9 0.22। सल्फर उसको 1 अगर पकड़ लेते हैं इसको हाँ तो 0.22। नाइट्रोजन का 0.94 नाइट्रोजन 0.94 जी। ये हो जाएगा ओके, एक चीज बाकी रह गया था, ऑक्सीजन। 0.22% फॉर्मूला पे अगर चले 140 ठीक है, 145 इंटू 48.52 7035.4। और 610H -1/80 ये आ रहा है 1248.21। 1248 और नाइट्रोजन का आ रहा है 9.4 10 इंटू 0.94। और सल्फर आ रहा है 32 इंटू 0.22 8.8। 8301 आ रहा है 8301 या 8301.8। हाँ तो इसका आंसर चेंज कर लीजिए सी है इसका डी नहीं ये है आएगा। करेक्ट आंसर सी है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें अपन को वेस्ट दे रखा है उसके डिफरेंट कंपोनेंट का परसेंटेज दे रखा है और उसकी बल्क डेंसिटी दे रखी है तो इसमें फर्दर 3 क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द ओवरऑल बल्क डेंसिटी बिफोर कॉम्पैक्शन बाकी बाकी अभी सर इस एक क्वेश्चन का पर्सन एक्सप्लेनेशन दिखा देंगे।
हाँ जी, जो पिछले वाले क्वेश्चन का, पिछले वाले यस क्वेश्चन का ना। हाँ, यस तो यस इसमें कार्बन कार्बन का आपका हो जाएगा 600 × 12। तो इसका कार्बन का आपका आ रहा होगा 48.52%, मतलब 7200 वो आ जाएगा वेट आपका कार्बन के लिए। अगर ग्राम्स मिलेंगे तो 7200 मान लीजिए grams। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए 1100 × 1, कार्बन का 600 है, 600 × 12 जो मॉलिक्यूलर वेट है। वैसे ही हाइड्रोजन के लिए 1100 × 1, क्योंकि 1 हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक एटॉमिक मास हो जाएगा आपको। तो एक, हाँ, तो ये कार्बन के लिए 7200 आपका हो जाएगा ग्राम्स। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो 1100 × 1, क्योंकि 1 एटॉमिक मास है उसका, तो इस ये आ जाएगा आपका 1100 ग्राम। ऐसे ही जब ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो 398 मोल्स दे रखे हैं, तो 398 इंटू 16 करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 6368 ग्राम। ऐसे ही फिर नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे तो नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा आपका वेट 10 × 40, तो 140। और सल्फर के लिए 32 × 1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखे हैं। तो फिर जो ये सारे जो वेट्स कैलकुलेशन है इनको ऐड कर दो, तो टोटल जो एडिशन आएगा वो 14840 आएगा। फिर हमको इनका हर हर एलिमेंट का कितना परसेंटेज कंपोनेंट है वो निकालना है। तो कार्बन का हमारे पास टोटल वेट 7200 आया था, तो 7200 डिवाइडेड बाय 14840, जो कि टोटल वेट है सबका। उस और कार्बन का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। तो कार्बन का परसेंटेज आ रहा है 48.52। ऐसे ही हाइड्रोजन का निकालेंगे तो वो 7.41 आ रहा है। 1100 डिवाइडेड बाय 14840, तो वो 7.41 आ जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन का आप निकालेंगे तो ऑक्सीजन का हमारा टोटल वेट आ रहा था 6368 ग्राम। उसको टोटल से डिवाइड करेंगे तो 14840, तो ये आ जाएगा 42.91%। नाइट्रोजन का आपका आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 14840, तो ये आएगा 0.94%। और सल्फर के लिए आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 14840, जो कि आ जाएगा 0.22%। तो अब ये जो परसेंटेज है सीधे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आखिरी में जो आंसर आएगा वो आएगा 8301.8 BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड। ओके सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो वेस्ट, एक वेस्ट दे रखा, मिक्सचर ऑफ वेस्ट दे रखा है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की परसेंटेज क्या है वो बता रखी है। बेसिकली कैरेक्टराइजेशन कर रखा है, कितना पेपर, कितना ग्लास, कितना यार्ड, कितना प्लास्टिक वेस्ट है, और उनकी हर कंपोनेंट की बल्क डेंसिटी क्या है। तो इसके इस बेसिस के इंफॉर्मेशन पे आगे 3 क्वेश्चन है जो आंसर करें। तो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ओवरऑल बल्क डेंसिटी बिफोर कॉम्पैक्शन। तो हमें इस ये जो अगर इन सारे वेस्ट तीनों चारों को चीजों को मिला दें तो ओवरऑल वेस्ट की बल्क डेंसिटी क्या निकल के आएगी वो निकालनी है पहले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। इस तरह का सवाल हमने पहले सेकंड क्लास में किया था, तो ये लगभग उस जैसे ही है। बस आगे आगे थोड़ा सेकंड क्वेश्चन उसके एक्सटेंशन में थोड़ा अलग है।
पहला क्वेश्चन क्या था सर? पहला क्वेश्चन था कि डिटरमाइन द ओवरऑल बल्क डेंसिटी बिफोर कॉम्पैक्शन। मतलब अगर हम ये जो चार इन्होंने कंपोनेंट दिए हैं इन चारों को मिला दें तो मतलब टोटल जो वेस्ट अब मिलने के बाद जो वेस्ट है उसकी उसकी डेंसिटी क्या होगी हमको। मतलब हर इंडिविजुअली सबकी डेंसिटी पता है, इंडिविजुअली पेपर की, इंडिविजुअल क्लास की डेंसिटी या डेज, बट इफ वी मिक्स ऑल और फोर कंपोनेंट्स देन व्हाट विल बी द डेंसिटी। तो वो सेम सेम चीज है जैसे अपन ने लाइक लास्ट वी डिड इन द सेकंड वीक। फॉर डेंसिटी फॉर्मूला वाज टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। So mass calculation we can directly do. We can assume 100 kg of waste, total waste, and assuming that 100 kg, we have to calculate total volume. So the in denominator volume will be mass by, we have to calculate. So mass by density. So for each component like paper, we can calculate volume by mass by density. 40 divided by 250 will give us the mass of paper. Sorry, volume of paper. Same thing we can do with glass, yard waste, and plastic waste. So we can calculate volume individually for every component, and we have assumed total mass to be 100 kgs. So 100 divided by total volume will give us the density. टू जीरो फोर 204 सही है, 204 is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Question है, assume that the compaction in landfill is 600 kg per meter cube. Estimate the percent volume reduction achieved during compaction of the waste. 600 kg पर इंक्लूड। अभी हमें पता है कि करंट जो डेंसिटी हमारी है वो 40204 है। 204 है। उसके बाद हमने we did compaction and we achieved density of 600 kg per meter cube. Now we have to calculate, estimate the percentage volume reduction कि कितना volume, how much volume reduction has happened during compaction of the waste. Because we achieve 600 kgs after compaction because it is higher density. मतलब हमारा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा हाँ, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। डेंसिटी हमारी उतनी कम होगी तो उसके डेंसिटी, उसके हाँ हिसाब से, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो उसके हिसाब से हमारा वॉल्यूम रिडक्शन कितना होगा, इसमें थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है। हमको क्या 30% लेना होगा वॉल्यूम रिडक्शन? तो वही वही वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, कितना परसेंट रिडक्शन। ओके।
34%. 34% is correct. पहले वाला वैल्यू वॉल्यूम हमारा कितना आ रहा था? पहले 0.49, 0.49 आ रहा था, 0.49 और अभी 0.167. 167. तो करंट जो हमें इसमें पूछा, एस्टिमेट द परसेंटेज वॉल्यूम रिडक्शन. या डिवाइड करना होगा उसको. 0.1. 0.167 डिवाइड बाई 0.49. तो ये तो केवल, इससे तो हमें केवल ये पता चला कि अभी जो कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रोड्यूस हो गया. हाँ, तो वो हमारा कैलकुलेट होना चाहिए 0.49 माइनस 0.166. तो ये जो अच्छा, इसका वैसे डिफरेंस आएगा उससे हमें पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम कम हुआ है. 0.49 माइनस ये, फिर डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम लेना होगा ना. ओरिजिनल वॉल्यूम जो प्रीवियस वॉल्यूम है, क्योंकि लॉजिकली भी देखें तो लगभग 200 से 600 जा रहे हैं हम, तो लगभग 3 टाइम्स है रिडक्शन. हाँ, तो तो 0.66 आ जा रहा है. हाँ, 66%. वॉल्यूम. ओके ओके. इस क्वेश्चन के लिए आंसर 204 है. Anybody has problem in the first question, bulk density estimation? Should we solve this question? Other people? इसमें तो हमको सिर्फ जो टोटल मास है 100 केजी हमने कंसीडर किया, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है 0.49 से. हाँ, 0.49 से फर्स्ट वाले क्वेश्चन में. हाँ, डेंसिटी वाला वही ना, 204 हाँ, वाला. उसमें पहले वॉल्यूम निकाल लेना है सबका. तो इंडिविजुअली वॉल्यूम निकालेंगे. मतलब 40 डिवाइडेड बाय 250, तो 0.16 मीटर क्यूब. 20 डिवाइडेड बाय 400, तो 0.05 मीटर क्यूब. ग्लास के लिए, यार्ड वेस्ट के लिए 20 kg डिवाइडेड बाय 250 बल्क डेंसिटी, वही मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, तो इसका आएगा 0.08 मीटर क्यूब. और प्लास्टिक के लिए वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 100, 0.2 मीटर क्यूब. सबको जोड़ देंगे तो 0.49 मीटर क्यूब. और फिर 100 डिवाइडेड बाय 0.49 आपको मिल जाएगा 204.08. तो 204 पहले वाले के लिए आंसर हो जाएगा 204. दूसरे वाले के लिए पहले हमारी डेंसिटी 204 थी, अभी हमारी डेंसिटी 600 है. तो पहले वाले के लिए तो वॉल्यूम हमें पता है 0.49 मीटर क्यूब. करंट वाले के लिए मास हमने अज्यूम कर लिया था 100 kg. डेंसिटी डेंसिटी डिवाइड बाय मास कर देंगे तो अपन को वॉल्यूम मिल जाएगा, which will be equal to 0.1667 meter cube. So the previous volume was 0.49 meter cube. Current volume is 0.1667 meter cube. So the previous volume 0.49 minus the current volume 0.1667 divided by previous volume.
So this calculation will give us the reduction in volume, which will be equal to 66%. This question answer will be 66%. Then the last part of this question is estimate the overall uncompacted bulk density if the miscellaneous paper is removed. लास्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो हमने वेस्ट मिलाया था यहाँ पे, ये जो वेस्ट है 4 कंपोनेंट है, अगर इनमें से मैं पेपर हटा दूं तो हमारी बल्क डेंसिटी क्या निकल के आएगी. 181.8 आ रहा है. 181.8. अगला क्वेश्चन है, next question is a colony has a population of 10,000 people living in particular colony and generates MSW at a rate of 0.5 kg per capita per day. If waste is compacted to 1200 kg per meter cube, how much landfill area is required if if even one time we are stacking the waste for up to the height of 5 meters. तो ये जो वेस्ट जनरेट होगा एक साल में, ये यहाँ से ऊपर इस कॉलोनी से, उसको अगर हम लैंडफिल में डालें तो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा अगर हम स्टैकिंग 5 मीटर हाइट तक करें. Waste is compacted to 5 मीटर है ना. टू हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ 5 मीटर. ये कितना टाइम के लिए? एक ये 1 ईयर के लिए. ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंडफिल एरिया इज नीडेड इन 1 ईयर if depth is 5 meters.
304 304.16 304 304 सही है, 304 सही है। इसके कैलकुलेशन में 10,000 रेजिडेंट्स हैं तो 10,000 इंटू पर कैपिटा, हर रेजिडेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पर डे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो 10,000 इंटू 0.5 जो हमको दे देगा 5,000 केजी पर डे। तो इस कॉलोनी से 5,000 केजी पर डे, हर दिन में 5,000 केजी वेस्ट जनरेट हो रहा है। फिर इफ द वेस्ट इज कॉम्पैक्टेड टू 1200 केजी पर मीटर की डेंसिटी दे रखी है, तो हमें कुल मिला के वॉल्यूम चाहिए होगा बाद में। तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 5,000 केजी पर डे जनरेट हो रहा है, और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक साल में कितना जगह चाहिए होगा, कितना एरिया, हाउ मच एरिया विल बी रिक्वायर्ड। So we can calculate how much waste is generated in a year. So 5,000 into 365, which will give us around 18.25 lakhs kgs per year. और फिर हम then we can use this density to calculate how much volume of waste it will be. So we have the mass which is 18 point, we have the weight which is 18.25 lakhs kgs, and if we divide it by the density which is 1200, you will get the volume which will be around 1520.83 meter cube. So 1520.83 meter cube divided by 5 meter, which is the height of the waste, which is basically the depth of the waste or height of the waste, which we are going to stack. Because of this height, we normally determine because of various limitations, like there will be shear failure in the, it can happen in the waste also. So based on various strength of the CN5 values of the waste which we have at site, we will going to determine some uh, height of the waste which we can stack. So if here we have 5 meter height, allowed height. So if we divide our total volume with this height, we will get certain area, which will be equal to 304.16 meter square. So that much amount of land area we require in landfill for 1 year, in 1 year, for accommodating the waste which is generated by 10,000 people, and where each day each person is contributing zero point 0.5 kg per capita, and we are compacting that waste to a density of 1200 kg per. So in 1 year, area requirement will be 304 meters square. The second question is, what volume of covered soil is needed in a year? Assume that the ratio of MSW is 4:1. So here the question is asking how much amount of, so if when in landfills, basically uh, we have cells. So once a particular cell height is achieved, we cover it with soil. Yeah. So the question is asking how much volume of soil is required uh, in a year. Like after the completion of the year, we need to cover the amount of waste which is collected during that 1 year. Now we want to cover it. So how much soil is required? For that calculation, he has given the additional information that assume that the ratio of MSW to cover is 4:1. सॉरी So he has given the information ये that उसी का है, ये yes, सेम similar, सेम क्वेश्चन का. same question का continuation है. ओके ओके. तो इसमें this question has given information that we need the amount of soil which we require as compared to MSW is in the ratio of 1:4, or volume of MSW to that of volume of soil is 4:1. So how much volume of soil we need?
380 हमको हाँ, डेंसिटी वही लेना है ना 1200 डेंसिटी वही लेना है। और तो 380। इस 380 आ जाएगा सीधे। सीधे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें कि हमें वॉल्यूम हमने पहले कैलकुलेट किया, वी हैव कैलकुलेटेड द वॉल्यूम फॉर दिस क्वेश्चन विच वाज अराउंड 1520.8 1520.83 meter cube, and we can directly divide it by 4. This calculation, because it is already given that it is in the ratio of 4 is to 1. So soil what we required is given that it will be 4 times less than the total volume of those MSW. So that volume we calculated for a year for MSW is 1520.8 divided by 4. You will get 380.2. So 380 meter cube will be the answer for this question. Anyone have any doubt in the last question, or if if nothing is there, we will like complete the session for today. It's already almost 8. So we'll continue with the next week's session and practice problem based on the week 4 content uh, in next Tuesday. Okay. Thank you everyone for attending the session. दिवंशु वीक 4 में तो नॉर्मली पूरा थियरी है, तो उसमें भी कैलकुलेशन करेंगे क्या? सर थ्योरी है तो मतलब मैं देखूंगा उसमें कि अगर न्यूमेरिकल कुछ हो सकता है तो मैं वो डाल दूंगा, या तो न्यूमेरिकल उस पे बेस्ड, या फिर प्रीवियसली जो हमने वीक 3 अब तक किए हैं उस पे कोई न्यूमेरिकल होगा तो वो देख सकते हैं, और अगर कुछ मतलब डाउट वाउट हो तो वो देख सकते हैं, नहीं तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं बहुत सारी। जैसे ठीक है। आज की प्रेजेंटेशन में भी मेरे पास ये जैसे न्यूमेरिकल्स के अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे काफी सारे, जो जो मतलब अपने फाइनल एग्जाम में मतलब कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल होगा, कुछ पोर्शन न्यूमेरिकल होगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे, लेकिन ये आज न्यूमेरिकल्स में निकल गया था सारा टाइम। तो मेरे पास अभी पिछले 3 वीक के कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम काफी सारे कलेक्ट हो गए हैं, तो वो अपन कवर कर सकते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर वीक 4 में अगर सर की तरफ से जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल नहीं है तो। हाँ, नॉर्मली वो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में था, इसलिए बोल रहा था। कलेक्शन एंड उसमें भी ट्रांसपोर्ट, उसमें भी सर उसमें भी कलेक्शन जनरेट हो ट्रांसपोर्ट, सकता है। हाँ कलेक्शन ट्रांसपोर्ट में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़े हाँ, थोड़े कुछ उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स पे चले जाते हैं, वो लीनियर प्रोग्रामिंग और उन सब पे। लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया अपना, पाथ ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें थोड़ा मैं देखूंगा न्यूमेरिकल उसमें, अगर मुझे मैं सर से और जो टीएस उनसे बात करते हैं, अगर उसमें न्यूमेरिकल वो किस तरह के न्यूमेरिकल बताने हैं तो उस हिसाब से अगर न्यूमेरिकल्स होंगे तो वो मैं इंक्लूड कर दूंगा, नहीं तो जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है काफी सारे वो कर लेंगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है थैंक यू भाई। ओके एवरीवन। दिव्यांश। या थैंक यू। बाय। बाय।